ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि ये थंबनेल लिखा भी है, कोर्ट लीगल डिक्टेशन स्टेनो सॉफ्टवेयर पर टाइप करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। ये नंबर आपको जो दिख रहे हैं दो, इन पे आप फ़ोन कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये जो डिक्टेशन है इसको सुन करके लिख के इसकी एक्यूरेसी आप जानना चाहते हैं और जिससे मतलब ये आपकी गलतियों का पता लग सके, तो वो जो है आप क्या कहते हैं इसके माध्यम से जुड़ करके आप इस नंबर पे फ़ोन कॉल करके इनसे जुड़ करके जो है इसको टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जान सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, इसको बोलते हैं स्टेनो सॉफ्टवेयर, जिसमें आप जो स्टेनो लिखोगे उसको जब आप टाइप करोगे तो टाइप करने के बाद आपकी जो है किस तरह की गलतियाँ आपने की हैं, आउटलाइन की गलती कितनी है, टाइपिंग की गलती कितनी हो, सारी आप इसे पता कर सकते हो। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। डिक्टेशन नंबर है ये 4007। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। टाइमर और लगा लेता हूँ मैं, जिससे मैं ये भी बता पाऊँ ये कितने टाइम में मैंने आपको बोली है। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Further, so far as the judgment cited by the respondents in civil appeal number 331 of 2014, we are of the view that the same has no application on the facts of the present case because the appellants in that matter are nowhere connected or concerned with the appellants in the present batch of cases as contended by the appellants. In that matter, the aggrieved persons have not challenged the acquisition proceedings, rather they accepted the acquisition but filed references for enhancement of compensation. The appellants therein have accepted the compensation in the year 2001 itself after the passing of the award, and their possession have been taken in the year 2001 itself by the authorities concerned, whereas in the present batch of appeals the appellants are still in possession and they have not accepted any compensation for their acquired land. Secondly, the impugned judgment in the present appeals is 2 years after passing of the impugned order in CA number 331 of 2014. Therefore, the impugned judgment of CA number 331 of 2014 is totally different from the impugned judgment in the present batch of matters and are in no way connected to each other. After referring to the aforesaid decisions with reference to the facts and circumstances of the case on hand, we are of the view that physical possession of the land belonging to the appellants have neither been taken by the respondents nor compensation paid to them, even though the award was passed on 6/8/2007 and more than 5 years have lapsed prior to date on which the Act of 2013 came into force. Therefore, the conditions mentioned in section 24(2) of the Act of 2013 are satisfied in this case for allowing the plea of the appellants that the land acquisition proceedings are deemed to have lapsed in terms of section 24(2) of the Act of 2013. The said legal principle laid down by this court in the case of Pune Municipal Corporation and other cases referred to supra with regard to the interpretation of section 24(2) of the Act of 2013 are applicable to the fact situation in respect of the land covered in these appeals for granting the relief
as prayed by the appellants in the applications. From the aforesaid decisions, the legal position that emerges is that when a repeal of an enactment is followed by a fresh legislation, such legislation does not affect the substantive rights of the parties on the date of suit or adjudication of suit unless such a legislation is retrospective, and a court of appeal cannot take into consideration a new law brought into existence after the judgment appealed from has been rendered, because the rights of the parties in an appeal are determined under the law in force on the date of suit. However, the position in law would be different in the matters which relate to procedural law, but so far as substantive rights of parties are concerned, they remain unaffected by the amendment in the enactment. ये 4 मिनट 55 सेकंड में जैसे मैंने इसको पढ़ा है, वर्ड में आपको बता देता हूँ ये कितने हैं। वर्ड में आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड हैं 502 ये वर्ड हैं। लगभग ये 102, 101 या 102 की स्पीड से पढ़ी गई डिक्टेशन है। 502 ये करेक्ट पूरे 500 वर्ड हैं। ऐसे ही आपको जो 5 मिनट की डिक्टेशन रहती है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और जो है अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 5-5 मिनट की जहाँ डिक्टेशनों का टेस्ट होता है, उसके लिए दी बेस्ट है। इसको पहले आपने अब लिख लिया है। अब आपके पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर हो जो आपकी शॉर्ट हैंड जो आप टाइप करें तो आपकी जो है गलतियों की, स्टेनो की आउटलाइन कितनी गलती हुई है, टाइपिंग की गलती है, स्पेलिंग की कितनी गलती हैं, इन सब को जानने के लिए हमने आपके लिए बना दिया है स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर। इसको आप इस पर आप जैसे इसको ले सकते हैं और इस पर जा करके टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जान सकते हैं। तो इस डिक्टेशन नंबर है लीगल 4007, उस पर ही जा करके आपको इसको टाइप करना है, तो वहीं आपको जैसे इसका पता लगेगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।